Okay, Siddhika, no problem. Yasir, were you present in the last lecture? अच्छा, आप नहीं present थे. So did you watch the recording? Martin, am I audible? Yes, sir. Yeah. Okay, fine. Please write a note. The second electron gain enthalpy of any element has positive value. Meaning it is endothermic. है ना? So you can also write successive electron gain enthalpy of an atom is endothermic. Only the first one is going to be exothermic. That means it is going to have negative value. Wrote this down, इसमें पिक्सल में. Siddhika and Yasir, please write this note. Okay. Please write this note. Okay. Done, sir. Done? Okay. Yasir, what about you? Done. Okay, very good. So, in today's class, we'll start now. This is 15th July, Saturday. Write this question. Predict the formula of stable binary compounds that would be formed by the following pairs of elements.
Those who don't know how to do these type of questions, you must have this type of question in your ninth standard. Okay, atoms, molecules, and ions. In this, simply what you need to do is, so we have lithium and oxygen. So what is the valency of lithium? You can get the valency by looking at the group number. Okay, so group number will tell you about the valence electron. Okay, and you should just see whether the valence electron is less or whether 8 minus valence electron is less. Whatever is less, that is going to give you what? That is going to give you the valency. So lithium is in which group number? Tell me, guys. Lithium is in group 1. So its valency will be 1. Oxygen is in group 16. 16, that means you have to take 6 valence electron. There will be 6 valence electron. So 8 minus 6 is 2. So 2 is the valency here. And you just need to cross multiply this. So you'll get LiO2. This will be the formula. Oh, sorry, my bad. Li2O. Lithium oxide. Is this clear? Yes or no? Martin, Yasir, and Yes, sir. Siddiqa? Yes, sir. What about others? Okay, so please do this part: magnesium, nitrogen, aluminium, iodine, silicon, oxygen, phosphorus, and fluorine. This one I will explain how to do this one. Write this down. Write the names, and you can send me on Zoom chat or WhatsApp, whatever you feel fine. Please send your answers once you're done.
We have got one answer. Okay, Yasir has given an answer. What about Siddika? Siddika not done. Sir, I'm just typing the answers. Okay, fine. Yes, Yasir, correct. Very good. Martin, I have not got answers from you. So, Oh, sorry, I sent it to the wrong time. acha, please send it to me. For the sixth one, please see when you have element 71. So for 71, you will have to write the electronic configuration for that particular atom. है ना? So what will be the electronic configuration? Tell me how to write the electronic. Achha, do you know how to write the electronic configuration using noble gases? Using noble gases, how to write the electronic configuration? You can start with xenon 54, right? You can start with xenon 54 because xenon is the noble gas which is before 71 and it is the nearest noble gas before 71. It is the nearest noble gas before 71. Okay. Now let me write the noble gases here so that you will get the electronic configuration. You will have Hey, Niaz, Are, Karo, Xerox, Lankin. I hope all of you guys know how to write this, right? Siddika and all. Yeah. So xenon is 1, 2, 3, 4, and fifth. Fifth noble gas. I will start from here 6s2, 4f14. By the way, how many electrons do I need here now? 71 and 17 more electrons, right? Yes. So one more electron now after 4f14. 17 only. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, array closer of Sanki. Yeah. So 4f15, and then what we will have? 5d. 5d. 1. 5d. 1. Okay. 5d1. So here what is going to be the valency? So this is the valence shell. Valence shell has 2 electrons, right? So if we are going to write it something like this, whatever the element 71 is, x we can write, and x valency is 2. For fluorine, the valency is 1. So if you cross multiply, you will get xf2. There are a few some please tell me. Yes, sir. Others are right. I mean, for Mg, you will have how much? Mg is 2. Mg is 2, nitrogen is 3. So this will be Mg3N2. देख लीजिए आप सब Mg3N2 लिखा है आपने से देखा ना हाँ ठीक है then aluminium iodide will be Al(I3). Silicon and oxygen is going to be how much? Silicon is 4, right? Gas heat, yeah, 4, and this is 2. So this is going to be S2O4. So we can get this as SO2. If you have anything common, you will remove it. Phosphorus, this will be PF3, right? And we got this XF2. Now we got this SO2, Salmi? Yes, sir. चलिए now यासिर ने क्या लिखा था SiO2 ना हाँ ठीक था SiO2 चलिए now एक तो इस तरह के सवाल भी आते हैं आपके पास एक दूसरा जो है टॉपिक प्लीज राइट डायगोनल रिलेशनशिप is right diagonal relationship. Okay, now what is diagonal relationship? When you see some elements, for example, please write it like this. Elements like lithium and beryllium show similarity with
show similarity with second element of the next group. That means next group from lithium is lithium के बाद क्या आता है beryllium. Beryllium के नीचे क्या आएगा magnesium. That means next group that is with magnesium and aluminium. With magnesium and what? And aluminium. This similarity is known as diagonal relationship. If you see lithium, so below lithium you have sodium, and after lithium you have beryllium. Below beryllium you have magnesium, and after beryllium, if I skip the d block elements, you will get boron, and boron के नीचे आएगा aluminium, right? So there is a relationship between, not relationship, rather there is a similarity between lithium and magnesium. तो ये diagonal बन रहा है यहाँ पे, है ना? That is why it is known as diagonal relationship, nothing else. They have similar properties. Okay, now why does this happen? Right, next point. देखिए अगर आप यहाँ पे देखें, what happens if I go in a period left to right, what happens? The size increases or decreases? What happens, guys, tell me? The size will decrease. Correct? Yes or no, please tell me. Size decrease करेगा, हाँ या ना बताएं? Correct है? Left to right, if I go in a period, the size will decrease. And what will happen if I go in a group top to bottom? Then the size will increase. अगर आप बेरिलियम से देखें तो बेरिलियम से लिथियम में भी साइज इंक्रीज हो रहा है, बेरिलियम से मैग्नीशियम में भी क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है. दैट इज व्हाई दे हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज. बेसिकली उनका एक रीजन क्या होता है, साइज में सिमिलरिटी एंड आल्सो सिमिलरिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. प्लीज राइट हियर. Diagonal relationship, DR, exists due to identical size of ions. Identical size of ions. As we move leftwards, size increases, and also size increases as we move down. Okay, that is why बेरिलियम से अगर आप लेफ्ट जाइएगा तो लिथियम साइज बढ़ गया, बेरिलियम से आप मैग्नीशियम जाइएगा, that also size is increasing. That is why when they have similar sizes, and that is why they are also having similar properties. Right, next. Elements present in diagonal to each other. Elements present and diagonal to each other exhibit similar property. This property may be density. Chi is what? Electronegativity. And electronegativity, polarizing power, etc. Polarizing power, etc. Done, sir. Is everyone done? बाकी सबने लिख लिया? Right, next point.
anomalous behavior of second period elements. Anomalous behavior of second period elements. Now, when you look at the first elements of group 1 and group 2, and from group 13 to 17, then they are going to differ with the subsequent element of the same group. यानी कि अगर हम बात करें ग्रुप 1 में, तो लिथियम का जो प्रॉपर्टी होगा, that is going to be different from sodium, potassium, rubidium, cesium and francium, है ना? It's going to be a bit different. Similarly, अगर हम बात करें इस ग्रुप 2 की, ग्रुप 3 की, ग्रुप 3 नहीं, ग्रुप 13 की, in group 13 we have boron, aluminium, gallium, इंडियम एंड थैलियम. सो बोरॉन की जो प्रॉपर्टीज है, इन सब से क्या है, सारे से अलग है. नाउ व्हाई इज दैट हैपन? पहले इस पॉइंट को तो लिख देते हैं, ये एनोमलस बिहेवियर है, एंड देन वी विल सी द रीजंस. प्लीज राइट द फर्स्ट एलिमेंट्स of group 1 and 2 and group 13 to 17. Group 13 to 17 differs in many aspects from subsequent elements of the group. From subsequent element of the group. Okay, right, next point. Now let us look at the difference between lithium and beryllium, है ना? इन दोनों को ले लेंगे, those two elements from group 1 and group 2, and we will look at the difference, how they are different from the other elements of the same group. So first of all, lithium and beryllium, they make compounds with high covalent nature because of their small size. है ना? So सबसे पहले इसी पॉइंट लिखिए, the first element of group 1 and group 2, that is lithium and beryllium, form compounds with high covalent nature. High covalent nature due to their small size. Due to their small size. Next, please write. The second period element only have four valence orbitals. कौन कौन से? 2s में 1 orbital and 2p में 3 orbitals. And that is the reason they can only accommodate 8 electrons. 8 से ज्यादा electrons second period के elements में कहीं भी bonding से नहीं बन सकते. Then you will write, and therefore they can accommodate only 8 electrons in their valence shell. In their valence shell. But beyond second period, है ना? Beyond second period, यानी third period and onward, beyond second period, elements have tendency to
make more than 4 bonds. है ना, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक बॉन्ड में होते हैं आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन. सो 4 bonds is going to have how many electrons? 4 bond is going to have more than 4 bonds होते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन. मोर देन 4 यानी कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन. Okay, and now since they cannot form more than 4 bonds, but when they have to form multiple, but they can form what? But they can form multiple bonds, and that is why they have a tendency, because they are very small, they can form pi bonds. Pi bond के बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे प्लीज लिख लीजिए. नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द सेकंड पीरियड एलिमेंट exhibit greater tendency to form pi bonds. ठीक है, अब ब्रैकेट में लिख लेंगे पी पाई पी पाई. ठीक है, पी पाई क्या है वो आपको नेक्स्ट क्लास में समझ, नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा. द सेकंड पीरियड एलिमेंट exhibit greater tendency to form pi bonds due to their small size. ठीक है, तो what are the differences? First difference is that if I look at the group 1 and group 2, so lithium and beryllium, they form covalent compounds, and rest of the subsequent elements, they form more of a ionic compounds. But when I look, and then if I look at the second period elements, so they cannot form more than 4 bonds. That means they cannot have more than 8 electrons in their valence shell. But the subsequent elements, the subsequent atoms from third group and on, from the third period and onward, they can form more than 4 bonds and accommodate more than 8 electrons in their valence shell. Also, the second period element, they exhibit greater tendency to form p pi bonds. That means they can form pi bonds, but the elements of the third period, they cannot form p pi bonds so effectively. Okay, these are the differences, and what are the reasons? So reasons, please write. What are the reasons for these anomaly? Reasons. Number one is very small size. है ना, relative to, compared to subsequent group members कर लीजिए, compared to subsequent group members. Second लिखिएगा high electronegativity. What is absence of disruption? Is everyone done writing this? Please tell me. I में स्पेलिंग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा. I में हमने HEIGH लिख दिया. I don't know why, but correct this. HIGH होगा. High electronegativity, absence of disruption, and a very small size compared to subsequent group members. What happened, Siddhika? You have to reconnect once again. So let us wait 1 or 2 more minutes and then we'll do. तारीफ आपने लिख लिया? So Martin नहीं यहाँ पे पीछे. Tarif is not there in this class, no? Okay.
Martin, are you done writing this part? Yes, sir. Yeah, done. Okay. Martin, can you please correct? Oh my God. नहीं ऐसे नहीं होगा ना. अच्छा चलिए ठीक है, हम आपको ये बता देंगे. What the valency and all. For P block, did you write this once again? इसको ठीक किया कि नहीं आपने? Martin, Yes, sir. did you correct these? Oh, yeah. Let me check. Yeah. Please correct these. Yeah, corrected. Okay, right, next. Oxidation state or oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसको फिर से थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस करेंगे. यहाँ पे यू हैव टू अंडरस्टैंड इट अ बिट ओनली. ठीक है, थोड़ा सा. प्लीज राइट व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट और द ऑक्सीडेशन नंबर. प्लीज राइट द चार्ज, which an atom of the element has in its ion or appears to have in its combined state. Okay. So it appears to have in its combined state, and that means when you have compounds, so there will be some charge that it appears to have, and in its ion, there will be a complete charge. So please see, we have two different cases. एक तो ion का case होगा और एक combined state का case होगा. So in case one, please write for ions. For ions, oxidation state or oxidation number is equal to charge on the ion. Charge on the ion of element. And if I talk about examples, I have Na positive, Cl negative, Mg2 positive, and O2 negative. And what else we can have? We can have H positive, right? F negative we can have, Al3 positive we can have. Okay, so all of these are what different charges. All of these are what different charges. And for ions, what you need to do, you just need to look at the charge on the ion, and that will be the oxidation state. So these are the examples. And what will be the oxidation state for sodium? It will be +1, chlorine will be -1, Mg will be +2, oxygen will be -2, hydrogen will be +1, chlorine will be -1, aluminium will be +3. Because Siddhika, we have just started with oxidation state. Oxidation state is a charge that appears on an ion, or a charge that is present on an ion or appears on a combined form. So we have just done ions. Please see, for ions, oxidation state or oxidation number is just the charge on the ion of the element. So sodium positive has +1 charge, so +1 is oxidation state. Cl negative -1, so -1 is oxidation state. And similarly, Mg2 plus O2 negative, H plus, F negative, and Al3 positive. You got this, Siddhika? Yes, sir. Okay, please write this down. Let me know once you're done, guys. Then we will look at the case 2, combined state.
Please let me know once you're done, guys. Yes, sir. Okay. Now let us look at case 2. In combined state. Now, any element can be combined in two different ways. पहला तो होगा when it is combined in its free elementary state or one of its allotropic form. क्या मतलब है इसका? See, we have number 1, combine with its own atom, है ना? With its own atom. Own atom का मतलब, for example, हाइड्रोजन है अगर तो H2 हो गया, ऑक्सीजन है तो O2 हो गया, right? Similarly, if you are having, let us suppose, nitrogen, तो N2 हो गया, right? And you can have what? P4. Sulfur होता है S8 के फॉर्म में, S8. Carbon is present in carbon. So all of these cases, when you have an element, it is attached with its own ion or its own atom. If it is attached or combined with its own atom, then the oxidation state of both of them. अच्छा, इसमें for example, you have helium also, है ना? तो यहाँ पे इसमें attached नहीं हुआ, but it is on its own. So if you have only hydrogen H2, O2, N2, then all of these cases, the oxidation state for each element will be equal to 0. ठीक है? तो O2 में oxygen, what is the oxidation state of oxygen in O2? It is 0. What is the oxidation state of nitrogen in N2? It is 0. What is the oxidation state of sulfur in S8? It is 0. All of you got this? Yes or no? Please tell me. Combined with its own atom. Okay. Next is combined with different atom. Combined with different atom. Okay. So here you have to just remember when you have compounds and they are formed by the combination of non-metals generally, then the atom with higher electronegativity gets negative oxidation state. क्या याद रखना? Atom with higher electronegativity gets negative oxidation state. Gets negative oxidation state. ठीक है, फिर इसका धीरे धीरे हम आप लोगों को तरीका भी बता देंगे, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड कैसे निकालते हैं, but you should have a general idea. Sir, Okay. could you scroll up a bit? Yeah, sure. Now, before going towards electronegativity, I must remind you about the electronegativity series. It is Phone Kal Bihari Ishq Pyar Hai, right? So F-O-N Paul Bihari Ishq Pyar Hai. So fluorine is maximum, followed by oxygen, nitrogen, chlorine, bromine, iodine, sulfur, carbon, phosphorus and hydrogen. ठीक है? तो ये आप सीरीज कम से कम याद रखें, that these are the most electronegative elements. So for sure, if I have a compound such as HCl, now in this, which is having more electronegativity, hydrogen or chlorine? Whose electronegativity is greater? Whose electronegativity is greater, hydrogen or chlorine, guys? This is the series. यहाँ पे देखिए होता है, this is electronegativity series. Tell me, whose electronegativity is higher? इतना टाइम लगाएंगे? किसका ज्यादा है, हाइड्रोजन का या क्लोरीन का? प्लीज लिखना बंद करें और बताएं. सिद्दीका, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? यासिर, करेक्ट, वेरी गुड. सिद्दीका, सिद्दीका को लगता है आवाज वगैरह नहीं जा रही है. Yes, sir. Whose electronegativity is higher? Martin, you tell me, whose electronegativity is higher? Between hydrogen and chlorine. Yes, between hydrogen and chlorine. Chlorine. Chlorine, right? So chlorine will get one bond, so it will get -1. This is the oxidation state of chlorine. And hydrogen is having one bond with chlorine, so it will get +1. So negative किसको मिलेगा? Negative will be for
chlorine. Negative will be for chlorine because it is having higher electronegativity. Similarly, let us take a bit more complex, nitrogen with 3 hydrogens. So obviously nitrogen is having what? Higher electronegativity. So for this hydrogen, it will be +1. This will also be +1. This will also be +1. Now, please remember, we have 3 hydrogens, right? We have 3 hydrogens, 1, 2, and 3. So due to first hydrogen, nitrogen will get -1. Due to second hydrogen, nitrogen will get -1. And due to third hydrogen, nitrogen will get -1. So in total, if you see nitrogen is having how much negative charge it is having? -3 oxidation state. Is that clear? Yes or no? Please tell me. Is that clear? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Similarly, if I have something different, for example, if I have NF3, nitrogen with 3 fluorine atoms, now the situation will be reversed. Which is more electronegative, nitrogen or fluorine? Which is more electronegative, nitrogen or fluorine? Tell me, guys. I bolo bhai. Yes. Which is more electronegative, Siddhika? Siddhika, आप लिख रही हैं तो please pen हटा दीजिए, बाद में लिखना है. Fluorine, yeah. So fluorine is going to get -1, -1, -1. And due to -1 of one fluorine, nitrogen will have +1, +1, and +1. So in total, the nitrogen is going to have what oxidation state here? It is going to have +3. So oxidation state, it depends on the atom which is combined. Nitrogen is -3 when it is attached with hydrogen, but +3 when it is attached with fluorine. Similarly, let us look at the oxidation state of H2O. So in H2O, hydrogen is attached with oxygen, and this hydrogen is also attached with oxygen. So can you guys tell me what is the oxidation state of hydrogen here? What will be the oxidation state of hydrogen? What will be the oxidation state of hydrogen? Oh my God, no answers. What will be the oxidation state of hydrogen? Oh my God. इतना समझाए तो समझ में आना चाहिए, I think. Which is more electronegative? Count बताइए. Oxygen और hydrogen के बीच में bond है ना? Tell me which is more electronegative? Oxygen or hydrogen? Oxygen. Yeah, so oxygen will get -1 for this bond, for one bond, okay? Oxygen is more. -1 और hydrogen क्या मिल जाएगा? +1. Similarly, this will also get +1 here or -1 here. So for each bond, you have to write +1 and -1 for each bond. Now tell me what is the oxidation state of oxygen here? What is the oxidation state? What is the oxidation state? Yes, correct, -2. Siddhika आया? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. अब देखिए थोड़ा सा, एक आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस लगेगा. Hydrogen bonded with oxygen. This oxygen is bonded with hydrogen, and then again it is bonded with hydrogen. This is known as hydrogen peroxide. For each bond, you have to tell me. ठीक है? चलिए बताइए हाइड्रोजन के लिए बताइए what will be the charge for hydrogen? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में which is more electronegative? जल्दी बोलो भाई. Can you keep your mic on, bhai? Keep your mic on, Martin, Yasir, and Siddhika. Keep your mic on. Yes. So what will be the charge on hydrogen? What will be the charge on hydrogen? 1. +1, -1, +1. और ऑक्सीजन पे क्या होगा for this bond? -1. Now tell me between oxygen and oxygen, which is more electronegative? Oxygen. ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ज्यादा? इस बॉन्ड की अगर हम बात करें, ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड, व्हिच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में? The first oxygen. Why first oxygen? Both of them are same only, ना? ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, राइट? So there will be no charges because of that bond, है ना? तो इस बॉन्ड की वजह से इस पे भी 0 हो जाएगा और इस पे भी 0 ड्यू टू दिस बॉन्ड. द नेक्स्ट बॉन्ड दैट वी हैव, इसकी वजह से क्या हो जाएगा? दोनों में 0 हो जाएगा. ओके, लेट मी जस्ट राइट. फॉर दिस बॉन्ड इट इज 0 and 0. ठीक है? If I talk about the blue bond here, then again this oxygen will get -1 और हाइड्रोजन क्या मिल जाएगा? +1, है ना? तो अब यहाँ पे अंडरस्टैंड, ये समझिएगा आप लोग, ऑक्सीजन पे -2 नहीं है. अब each oxygen has -1 charge. Okay, so it is not -2. टोटल नहीं कर देना आपने. Okay, you don't have to total it.
What you need to do? You need to just see each oxygen के पास कितना. यहाँ पे देखिए each oxygen had what -2 charge, है? But here you have each oxygen is having -1 charge. तो oxygen पे oxidation state क्या है? -1. And what is the oxidation state of hydrogen? Just for example, hydrogen का हम यहाँ पे +1 +1 +2 तो नहीं कर देते थे, right? We did not do +1 and +1 +2 for hydrogen. है ना? तो for each hydrogen we still say that there is +1 oxidation state. Similarly here oxidation state for oxygen is what? -1. अब इसमें देखा ये गया, प्लीज सी हियर गाइस, देखा ये गया, जनरली स्पीकिंग वी कैन हैव सम ऑब्जर्वेशंस. एक तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, हाइड्रोजन इज ऑलवेज +1 except when attached with metal. Metal के अलावा हाइड्रोजन कहीं भी हो जाए, it will be +1. Second point is fluorine is always -1 because it is most electronegative. Oxygen is generally -2. Oxygen is generally -2. अब जैसे यहाँ पे देखिए -1 हो गया, but generally क्या रहेगा? Oxygen is going to be -2 only. Next we can write halogens are, halogens मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आयोडीन. ठीक है, तो फ्लोरीन को हटा दे बिकॉज फ्लोरीन तो -1 हमेशा रहेगा. आर जनरली -1. नेक्स्ट वी कैन राइट 2 more पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है. ग्रुप 1 एलिमेंट्स, these will be +1. Group 2 elements, these will be +2. ठीक है, so if you remember only these, अब यहां तक तो आपको बिल्कुल याद ही हो जाएगा, -1 +1. बट ग्रुप 1 ग्रुप 2 के लिए बहुत आसान है, ग्रुप 1 +1, ग्रुप 2 +2. Okay, so please write this down. Let me know once you're done. Answer. Now let us find out oxidation state of some complicated elements, है ना. थोड़ा सा complication रहेगा, otherwise it is going to be fine. Mainly तो हमको redox reaction में करना है, but we will see some questions here also. Determine the oxidation state of underlined elements. ठीक है, एक एग्जांपल हम करते हैं. फॉर एग्जांपल यू हैव Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3. यहाँ पे आपके पास अंडरलाइन किया हुआ है, मान लीजिए you have aluminium which is underlined. So how are we going to find it? Please see, don't write anything. अच्छे से समझिए पहले. What we have to find? Tell me. You have to find for aluminium characterization. Please tell me. Yes, sir. So let oxidation state of aluminium is equal to X. What will be the oxidation state of aluminium? X मान लेंगे. कितना मान लेंगे? Tell me, guys. X. X. And how many aluminium are present? How many aluminium are present? अरे बोलो भाई, how many aluminium are present in Al2O3? 2. 2 aluminium, right? So I will write 2X plus how many oxygen? There are 3 oxygen. And what is the oxidation state of oxygen? Generally speaking, it is -2. Correct, guys? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, 3 into -2. And is there any charge, overall charge यहाँ पे कुछ दिखाया है इन्होंने? Al2O3 पे इतना charge है. You cannot see any charge, right? So charge is 0, so it will be equal to 0. Overall charge 0 हो जाएगा. So we can write 2x plus 3 into -2 will be -6 is equal to 0.
and 2x will go this side, minus 6 will go that side, it will become plus 6, and x will be equal to 6 by 2, that will be equal to plus 3. So what is the oxidation state of aluminium? You will write oxidation state of aluminium is equal to plus 3. Clear है guys? Jason, please tell me. Yes, sir. आसान है ना? चलिए, please write this down. See next one. थोड़ा सा complicated. KMnO4. And here they have underlined manganese, Mn. ठीक है, सबने लिख लिया? हाँ यार, Al2O3 सबने लिख लिया? Sir. Okay. Now you can see that here we have potassium, manganese and oxygen. तो potassium का क्या होता है? Potassium is in which group? It is in group 1, तो इसका +1 हो जाएगा. मैग्नीज का x ले लेंगे एंड फॉर ऑक्सीजन इट विल बी व्हाट 4 into -2 है ना. इन सबको ऐड कर देने से कितना आना चाहिए? 0. तो लेट अस मेक एन इक्वेशन नाउ. 1 plus x plus 4 into -2 is equal to 0. So we can write 1 plus x plus 4 to the -8 will be equal to 0. सही है. Now what we can do? X will be equal to -8, that उधर चला गया, और +1 उधर चला गया, -1. So x will be equal to +7. मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा ना? +7. दिस विल बी +7. इज दैट क्लियर गाइस? यस और नो प्लीज टेल मी. Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को? आई होप यू गाइस हैव नो प्रॉब्लम हियर. ठीक है, चलिए. राइट, नेक्स्ट, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑक्साइड्स ऑफ various elements. ठीक है, पहली बात तो ऑक्साइड्स जो है ना, आपके पास जनरल केस जो है, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल. एक को हम बोलते हैं मेटल और दूसरे को क्या बोलेंगे बताइए? One is called metal and the other one is called, अरे बोलो भाई, दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? मेटल होता है और एक क्या होता है? एक मेटल होता है, दूसरा नहीं पता? ओ माय गॉड. हाँ, सिद्दीका, यासिर, तारीफ, सॉरी मार्टिन. सिद्दीका, यासिर एंड मार्टिन, नो आइडिया. अरे भाई, एक होता है मेटल, तो दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन मेटल. ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? नॉन मेटल्स. राइट. सो ऑक्साइड्स होंगे मेटल के और नॉन मेटल के. ऑक्साइड्स क्या होंगे? एक तो होंगे मेटल के और दूसरे कहाँ के होंगे? नॉन मेटल. अब जब बात आएगी मेटल के ऑक्साइड्स की, तो मेटल के ऑक्साइड्स के 2 टाइप्स होते हैं. मेटल ऑक्साइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स. क्या टाइप है इनके? नंबर 1 इसमें होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड्स. ओके. नंबर 2 होता है जिसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. नॉन मेटल्स में भी 2 टाइप होते हैं. एक होता है एसिडिक ऑक्साइड्स और दूसरे होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स. ठीक है, अब ये समझ लेते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इन सब का मतलब क्या है. ठीक है, तो अभी लिखना ना शुरू करें आप लोग, है ना, बिकॉज आई एम गोइंग टू एडजस्ट दीज थिंग्स. The basic oxides are very easy to understand. Basic oxide क्या होंगे? Basic oxides are going to be the oxides which act as base when added to acid. They are going to act as what? Act as base. And acidic oxide, they are going to act as acid. यानी कि these will react with
ये एसिड के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन देंगे. एंड व्हाट अबाउट एसिडिक ऑक्साइड, दे विल रिएक्ट विथ बेसिस. इज दिस क्लियर? यस और नो, प्लीज टेल मी. हाँ या Yes, ना sir. बताएं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी हैव एम्फोटेरिक ऑक्साइड. दे रिएक्ट with both acids and base. एसिड और बेस दोनों से वो रिएक्ट करते हैं. दैट मींस दे हैव बोथ द नेचर. यानी कि अगर आप उनको बेस के साथ डालिए तो एसिड की तरह नेचर शो करेंगे, अगर आप एसिड के साथ डालिए तो वो बेस की तरह नेचर शो करेंगे. ठीक है. व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड? दे रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस. न्यूट्रल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? दे डोंट रिएक्ट, दे रादर नाइदर रिएक्ट्स with acids nor with bases. है ना, कि एसिड और बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते. यानी कि आप इनमें एसिड डालिएगा तो H+ आयन की कंसंट्रेशन उनके सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी. अगर आप इनमें बेस डालिएगा तो फिर क्या होगा, OH नेगेटिव की इसमें कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. ठीक है. सबसे पहले बहुत जो आसान चीज है वो याद करना क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड्स को. ठीक है. तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स बिल्कुल हम यहीं पे लिख देते हैं. 4 न्यूट्रल ऑक्साइड्स आप लोग को बस याद कर लेना है. क्या क्या है वो? यू हैव टू रिमेंबर. नो, क्या रिएक्ट नहीं करता ना, तो नो. ठीक से सुना नहीं उसने कि आपने नो बोला, तो फिर उसको और क्या बोलिए, N2O, डबल बार नो, डबल बार नो. एंड उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर. को हो, ऐसे आप लिख लीजिए. नो नो को हो. हाउ विल यू रिमेंबर? नो नो को हो, नो नो को हो. ठीक है. नो नो को हो. These are neutral oxides. Then we have amphoteric oxides, and as you can see, nitrogen, carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen, all of these are what? All of these are what? Non-metals. These are not metals. ये metals नहीं. अब बात आती है किसकी? Amphoteric oxides की. किसकी बात आती है? Amphoteric oxides की. Now, amphoteric oxides में आप लोगों को कुछ जो है खास याद रखना है, and others you don't have to remember very much right now. धीरे धीरे आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे. ठीक है. सो व्हाट आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड दैट यू हैव टू रिमेंबर? इनमें आते हैं Zn, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, गैलियम, Pb यानी लेड, Sn यानी टिन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. आप करें ऐसे लिख लें, एक सेकंड, इनको अलग से लिख लें. बिस्मथ, AS, एंटीमनी, बिस्मथ, एंड देन INGE. ठीक है. और इनको एक साथ लिख लें. ठीक है. हाउ टू रिमेंबर दिस? इसको कुछ ऐसे याद रखेंगे आपको. जनाबे आली, कुछ और पेन से लिख देते हैं इनको, है ना. जनाबे आली, पेन दूसरा, जनाबे आली. इन दोनों के लिए है बेकार. क्या है? जनाबे आली ने, ऐसे कर लीजिए, ने बेकार गाया, बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग. जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग. जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग. आज सब भिखारी, आज सब भिखारी इंदौर गए. आज सब भिखारी इंदौर गए. ठीक है, आसान है. एम्फोटेरिक ऑक्साइड में क्या याद रखना है? जनाबे आली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब भिखारी इंदौर के. अब जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है उनको मार्क कर दे, या जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मार्क कर दे? आई थिंक जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मार्क करना ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज इसमें आपके पास कम एलिमेंट्स हैं. फॉर एग्जाम्पल यू हैव जिंक एंड क्रोमियम. ठीक है. आई थिंक दीज आर दी ओनली वंस दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर. सारे याद कर ले फिर तो जिंक और क्रोमियम के अलावा क्या दिक्कत है? बिकॉज ऑल ऑफ दीज अदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना. तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए.
ठीक है, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल पता चल गया। इसके अलावा जो कुछ बच जाए, जो भी रहे, उनका क्या करेंगे हम, दे विल बी आइदर मेटल तो हो जाएंगे बेसिक, इफ दे आर नॉन मेटल तो हो जाएंगे एसिडिक। इज दिस क्लियर? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। Yes, sir. ठीक है, चलिए इनको प्लीज बहुत अच्छे से लिख लीजिए। Done, sir. Okay, just give me a second. एनसीईआरटी में एक जैसे एक ये सवाल है ना, उसको सोल्यूशन भी हम यहाँ पे लिखते हैं। सी हियर, दे आर आस्किंग शो बाय अ केमिकल रिएक्शन विद वाटर, है ना, वाटर के साथ आप रिएक्शन शुरू कीजिए, दैट सोडियम ऑक्साइड इज बेसिक ऑक्साइड एंड क्लोरीन ऑक्साइड इज अ एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप किसी बेस को, इफ यू ऐड वाटर टू इट, इसमें आपको क्या मिलना चाहिए, यू शुड गेट OH नेगेटिव आयंस, है ना। उसी तरह से आप अगर एसिड को वाटर में डालेंगे, then you will get H plus ion. Now this OH negative ions can be form of a strong base, or H plus ion will be in the form of what? Strong acid. So same reaction happens. You will see that N2O, Na2O, it forms strong base, whereas Cl2O7 it forms strong acid. है ना, उन्होंने reaction दिखा दिया कि sodium oxide, if you react with water, you are going to get sodium hydroxide. ठीक है, that means if you have any metallic oxide, अब देखिए यहाँ से generalization आप लोगों को कैसे निकालना है from NCERT. That means you can write, if you have any metal oxide आपके पास है प्लस वाटर, क्या मिलेगा आपको, मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, यू विल गेट MOH। ठीक है, द नंबर ऑफ OH कैन वेरी, but you will get metal hydroxide. Are going to get what? You are going to get metal hydroxide. This is an important observation. Similarly, अगर हम बात करें जैसे Cl2O7 है प्लस H2O, तो यहां से आपको नॉन मेटेलिक हाइड्रोक्साइड मिलेगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ, फॉर एग्जांपल हियर है HClO4। उसी तरह से अगर आप करेंगे SO3 या SO2 प्लस H2O, तो सल्फर डाइऑक्साइड विद H2O, H2SO4 दे देगा। ठीक है, यू आर गोइंग टू गेट एसिड्स इफ यू आर गोइंग टू रिएक्ट दिस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद वाटर। ठीक है, प्लीज लिख लीजिए सवाल को। Let me know once you're done.
Done, sir. Okay. We'll also see a question in your NCERT that will talk about oxidizing property. Okay, so please write the question. Arrange the following in increasing order of oxidizing property. Okay, so although this is a portion of the chapter redox reaction, तो यहाँ पे हल्की सी झांकी, थोड़ा सा ट्रेलर देख सकते हैं हम लोग, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, एंड यू हैव नाइट्रोजन. ठीक है, तो थोड़ा सा आप ये समझिए, when there is, अच्छा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आप लोगों ने पढ़ा है ना क्लास 10th में. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? टेल मी. chemical equations and chemical reactions and equation, पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, राइट? What is oxidation? When an element gets oxidized, it gains oxygen. It gains oxygen, है ना? It gains oxygen. और अगर reducing क्या होता है? When it loses oxygen. When it loses oxygen, है ना? ठीक है, और उसी तरह से ये भी कह सकते हैं, अच्छा, ऑक्सीजन का लॉस या हाइड्रोजन का गेन. Both of these are what? Both of these are, tell me what? Both of these are reduction. हाँ, रिडक्शन है भाई. ऑक्सीजन का गेन और हाइड्रोजन का लॉस, दिस इज ऑक्सीडेशन. सही है? ऑल ऑफ यू गाइस लिसन प्लीज टेल मी. Yes, sir. ठीक है, थोड़ा समझिएगा. कोई एटम है, कोई एलिमेंट है, मान लीजिए आप इसको ए. ठीक है, अगर ए के साथ ओ अटैच हो गया, क्या कहा हमने, बताइए. ए के साथ क्या अटैच हो गया? ए के साथ क्या अटैच हो गया, बताएं. अरे बोलो भाई, ए के साथ क्या अटैच हुआ? ओ. Now tell me, when A is attached with O, तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है? ऑक्सीजन हैज अ टेंडेंसी ऑफ -1, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ए पे क्या हो जाएगा? +1. हाँ या ना? Yes, sir. टेल. सही है? एनी प्रॉब्लम हियर? नो ना? नो प्रॉब्लम. No, इफ आई sir. टॉक अबाउट रिडक्शन, अगर ए के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया तो हाइड्रोजन आर जनरली +1, तो ए पे क्या हो जाएगा? -1. हाँ या ना? Yes, sir. ये क्या था? रिडक्शन. और ये क्या था? ऑक्सीडेशन. हाँ या ना? Yes, Correct, sir. guys? Yes or no, please tell me. Now, if you try to understand it a bit, what is happening to the charge of A when reduction is happening? A पे क्या charge आ रहा है, बताएं? Negative. And when it is getting oxidized, क्या charge आ रहा है उस पे? Positive. Positive. So positive sign को can I relate it with loss of electron? And can I relate reduction with gain of electron? है ना? नेगेटिव चार्ज अगर लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, और अगर इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज गेन करेगा तो क्या? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर. यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस. Yes, sir. ठीक है. So we can also write, or we can also tell that oxidation is what? It is loss of electron and reduction is gain of electron. ठीक है, एक ये नया डेफिनेशन आप लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में, बट यहाँ पे हमने थोड़ा सा झांकी दिला दी. आई होप दैट इज लॉजिकल आल्सो. व्हेन यू अटैच ऑक्सीजन यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव चार्ज. Positive is very similar to cation, and cation में what happens? Loss of electron happens. When you add hydrogen, then obviously it is what it is having. It is getting a negative charge, and when it is having a negative charge, that means it is a kind of a gain of electron, such as anion. ठीक है. अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की मतलब ये होता है, which of the following can oxidize in a very good way? Which of the following can oxidize in a very good way? तो इन सब में से सबसे ज्यादा टेंडेंसी ऑक्सीडेशन में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, राइट? In oxidation, what should happen? Positive charge should be there. Now, which of the following element has the highest tendency to bring positive charge? To bring positive charge when combined. तो ये ध्यान दीजिए आप लोग,
Out of all of these, the one which has the greatest tendency to bring positive charge will be most electronegative element. है ना? अगर if something is most electronegative, that means it is attached to whatever element, that other element is going to get a positive charge. ये तो हो गया oxidizing property. ये किसी के साथ भी लग जाए उसका oxidation हो जाता है. Correct, guys? Yes or no? Please tell me, Siddika, Martin, and Yasir. Yes, sir. So out of this, which is having the greatest, electronegativity, that is fluorine. So fluorine will be the with maximum oxidizing property. किसी पे भी लग जाए oxidation हो जाएगा. उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, एंड उसके बाद, अच्छा एक सेकंड थोड़ा सा आप यहाँ पे ये करेंगे, उसके बाद क्लोरीन को लिखेंगे एंड देन यू राइट नाइट्रोजन. ठीक है, क्लोरीन एंड देन नाइट्रोजन. हाँ, वो हम आपको बता रहे थे, आपको बता रहे थे. पहले लिख लीजिए इसको. What happens with chlorine is, क्लोरीन के पास जो Z है, the atomic number of chlorine is higher, and that is why chlorine has higher proton numbers. It has higher proton numbers. और अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो तो नाइट्रोजन के बारे में अगर शायद हम लोगों ने पहले पढ़ा था, has been a bit wide, but if I compare nitrogen and oxygen, तो नाइट्रोजन से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है. ठीक है, and that is why what happens, nitrogen is getting lesser priority. Main reason इसका ये, chlorine gets higher nuclear charge. That is why it is having more oxidizing power. और अब थोड़ा सा अगर आप और आगे जाके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि it is not only electronegativity, थोड़ा complicated है. इसमें तीन चीज होती है whenever we talk about oxidizing property. तो those things will come in the chapter thermodynamics. उसके बाद आप लोग सही से redox reaction पढ़ सकते हैं. And इसमें there are few things which come into play. One is ionization enthalpy. Second is electron gain enthalpy. ये दोनों चीजें तो आप लोगों ने पढ़ ली हैं. एक तीसरी चीज आएगी, that is known as hydration enthalpy. ठीक है, तो जो हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है क्लोरीन का वो काफी ज्यादा होता है नाइट्रोजन से. दैट इज वाई. So these are the 3 points which come into play, है ना, when we talk about oxidizing power or when we talk about oxidizing power or reducing power. ठीक है, डिटेल में आपको समझ में आएगा redox reactions में when we talk about hydration energy. Please let me know once you're done, guys. Done, sir. Yeah, done, sir. So I think that's it. And in tomorrow's class, we will do some more questions. और उसके बाद we can start the next chapter, that is chapter number 4.